Hello everyone. Hello. If you can hear me, please write in chat box. I want you all to hear me. Oh, please respond. Yeah, thank you, Lolita. Thank you, Anuj. I'll request you all to rename yourselves as college name underscore your name. I welcome you all to the day 2 session. Today we'll learn about MATLAB by Dr. Jain sir, followed by the spiritual session. Before starting with these sessions, I would like to announce the star of the day and the top performers of quizzes. I hope you all can see my screen. Yes, sir. Thank you. So here are the top performers for yesterday's quiz. Number one is Mahendra Verma. I congratulate you. You all can congratulate him in the chat box. The second position is held by Ravi Ranjan, Ansh Bhadoria, Anirudh Khada, and Ishika Brar. And the third position is secured by Vipul Gupta, Parthamesh, Yerni, Pujitha, Yashwant, and Bhavya. I congratulate all the top performers of the quiz. Now the time for the star of the day. Star of the day is Ansh Bhadoria from Triple ITB. I congratulate you, Ansh, for being the star of the day. We all can get inspired from them and try to be the top performer and star of the day for the next day. So thank you everyone for joining. Now I would like to introduce our instructor for MATLAB. Our instructor for MATLAB is Dr. Jayant Kumar. Dr. Jayant Kumar Mohan. He has completed his BTech from IIT Indore in 2010. During BTech, he was elected as General Secretary of Student Council. I think we all have sometimes in our life has seen a dream to be a part of a student council either in school or in college. He was IBM campus ambassador for the year 2012. We all know how big company IBM is. He was also the team captain of IIT Indore Robocon team in 2014. After BTech, he completed PhD in robotics in 2018. During PhD, he published 6 international journals, 8 book chapters in international conferences in Springer publications in and he has 2 Indian patents. He also presented papers in many international conferences in India, Germany, and Turkey. He pursued his postdoctoral research in IIT Kanpur and currently is assistant professor in IIT Jodhpur. We have the privilege to hear from the assistant professor at IIT Jodhpur. Dr. Jayant Kumar sir. Before starting, I would like to remind you about some do's and don'ts. One of the do is we should start our video. I request you all to start the videos if possible. And we now have Dr. Jayant Kumar sir with us. Sir, I'd like you to take over. Thank you.
Okay, so I hope you can hear me. Yes, sir, we can hear you. Okay, sure. So I feel I have the right to share my screen. Yes, sir, Yeah. you can share your screen. I can share my screen. Okay, so welcome you all to our first session on MATLAB. So I'll be taking 4 sessions. So in this 4 session, I will be introducing you to MATLAB. After 4 sessions, I expect that you will be able to do few coding by yourself. Okay, so I'll be teaching from the very basic. I am expecting that you know nothing. I think there is some internet issue at his end. Don't worry, he'll join soon. Until then, all of you who have not renamed themselves, please rename yourselves, otherwise your attendance won't be marked. Okay, so sorry. So as I was talking, that sometimes the signal may go down. So please bear with it, and I will try to be consistent. And now, without any delay, we'll start up with MATLAB. Okay, so I'll share my screen. I will share my whole screen, in fact. Where is that screen? Yeah. So, okay, so you can see a MATLAB screen. If you don't have MATLAB, you can also use online MATLAB. That is again an equivalent tool in which you can code the MATLAB coding. Another is Octave. If you want a free version of MATLAB offline on your computer, you can download Octave. Little bit deviation from the exact coding of MATLAB, like 1 or 2 codes are different, or else all the commands are same. Same structure, same thing. Maybe for clearing the screen, you have CLC here, there it will be clear. So instead of clear all, you have to write only clear. So this is the only difference. Octave, that is a free software you can download offline and you can run it in your own PC. So Octave, you can write Octave, you can download the latest version for free. It is equivalent to MATLAB. In terms of capacity, MATLAB is much faster because it's a paid software. Generally, institute take it, but a free version is available, which is Octave, which is almost equivalent to MATLAB. It is little slower in terms of doing faster calculation. Like if there is a very huge calculation, then only you will able to see some difference in speed, or else it looks same. Okay, so if you want an offline version of yourself, you can do it in Octave. Okay. So here you can see there is a command window, there is a workspace, and there is a current folder. So whatever is in the current folder, okay, in this, whatever is in your current folder, only those files you can run. If by mistake, if you're trying to run a file which is not in your workspace, not in your current folder, what will happen? It will ask that change folder, and then you can run it. Without saving a code, you cannot run the code in MATLAB. Okay, similar with Octave. You cannot run a code without saving it. You cannot start the name of the code with a number. Like I have written here. You can current folder. You can see there is something called 1000326.m. 1000326.m. This is my BTech roll number. So you cannot run this file because what will happen if I open this file.
It will open this file, and if I run, it will just print the number. It will not be able to run. So while saving there's some code. I have defined a equal to something and c equal to a. So it should create some variable in workspace. But what will happen if I run? Oh, it is asking change folder. Okay, I change the folder. So what will happen if I go to the command window? See, it prints the answer 1000326. It is not running the code. In the workspace, you can see which variables are created during the code. So command window is something where you can directly check the code. Like, I write a equal to 5. So see, in the workspace, I got a variable equal to 5. I write b equals to square bracket 1, comma 2, comma 3. So I got 1, comma 2, comma 3. If I write c equals 1, colon 2, colon and 3, I get a vector. So now you can see the difference. If I define something as a number, it is a 1 cross 1 matrix. And if I define anything as a group of numbers, it can give me a matrix. Unlike C, in C you have to define A is a size 5 size matrix, B is a size 3 cross 3 matrix. You don't have to define in MATLAB. Suppose I want to define a 3 cross 3 matrix, I can directly give, like D equals square bracket. You need to start a matrix with a square bracket. 1, 2, 3, space or comma, it is equivalent. Colon, like semicolon, is for changing the row. It's 4 space 5 space 6, then colon, and then 6 space 7 space 8. Now I will be getting a 3 cross 3 matrix. In the workspace also you can see we're getting it. So this is the way every number in MATLAB is stored as a matrix. If it is single number, it is 1 cross 1 matrix. You want to see how it is stored? I will show you. The variable a. If I double click on this a, it will show you a space. All these are empty spaces. You can see empty spaces all around. All these are empty spaces, and we have 5 in the first column and first row. So this is 1 cross 1. And now, since it's the matrix, so every operation will be a matrix operation. Okay. So matrix operation. Now let's see what we can do with this matrix operation. Okay, I'll just close this workspace window. Okay. So I have a D matrix. I have a D matrix. I want to do a transpose of it. I want to store it in a matrix E, and I want to transpose of it. It's very easy. It's D dash. If you do D dash, it is transpose of it. Okay, now I want to do inverse of it. E equals to, I can override the matrix E. I can write I and B of D. It will take some time to calculate, and it will give us inverse, means 1 into 10 to the power 15 multiplied with this matrix. Okay, so this is the way. Okay, now I want to do little more operations on matrix. I want to add to matrix. Okay, of equal size. Matrix addition, it's on equal size. So for example, I have a matrix called Q equals 2 space 3 colon 4 space 5, and this is Q, and I have a matrix called R, which is 5 space 6 colon 7 space 8. So you can, how we add matrix. If you add Q plus R, the result would be 7, 9, 11, and 13. So 7, 9, 11, and 13 should be like, you add corresponding digits. But multiplication would be different, because multiplication, matrix multiplication happens
first row wise and then column wise. So like if you multiply Q into R, it will be matrix multiplication. But what if I want to multiply corresponding matrices, like 1 cross 1 multiplied with 1 cross 1 of the other, okay, and 2 cross 2 should be multiplied with 2 cross 2. Corresponding elements should be multiplied. As I have done in addition, I want to multiply the corresponding. So for that, there is a dot operator. So there are matrix operation as usual, but there is a dot operator. Remember dot operator. So dot operator is for corresponding multiplication, corresponding division. Okay, please keep it in mind so that while coding it will be easier. I'm just giving you some basics so that it will be easy for you to code. तो आपके लिए आसान रहेगा कोड करना अगर आपको ये बेसिक्स बताओगे तो. So let us see how it is Q into R if I add a dot operator. Q dot into R. Now it will be Q and R. आपको दिखाई दे रहा होगा Q and R. Q भी दिख रहा है, R भी दिख रहा है. So 2 into 5 would be 10, 3 into 6 would be 18, 4 into 7 would be 28, and 5 into 8 would be 40, corresponding multiplication. So 10, 18, 28, and 40. So this is corresponding. So if you want to, and similarly it will be divide. Okay, corresponding divide भी होता है, corresponding multiply भी होता है. Okay, fine. So it will be helpful. चलो एक छोटा सा कोड लिखते हैं. Let us write a small code. Okay, छोटा सा कोड लिखते हैं so that आप लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हो. मैटलैब ऑनलाइन मैटलैब पे भी ट्राई कर सकते हो. कमांड विंडो को क्लियर करना है. देयर इज अ कमांड कॉल्ड CLC, clear command. Workspace, to clear workspace you can clear the whole workspace or you can clear one single variable. Okay, आप एक वेरिएबल हटा सकते हो या सारे वेरिएबल हटा सकते हो. कैसे? क्लियर A, अगर मैंने क्लियर A लिखा है तो क्लियर को एक को क्लियर कर देगा. ओके फाइन, क्लियर कमांड. सबको क्लियर करना है मुझे. आई वांट टू क्लियर ऑल, सो आई विल राइट क्लियर all. So now the all command will clear the whole workspace. जितना डेटा है, जितना वेरिएबल है, जितना स्टोर हुआ है, सब क्लियर कर देगा. ऐसा जनरली यूज करते हैं जब मुझे नया कोड रन करना है. इन द बिगिनिंग ऑफ द कोड आई यूज क्लियर ऑल कमांड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम, ताकि पहले के सारे वेरिएबल डिलीट हो जाएं और कोई रिपीटेशन ऑफ वेरिएबल ना हो. So clear all. वर्कस्पेस खाली. ओके, वर्कस्पेस खाली, क्लियर हो गया ऑल. ओके, अब एक काम करते हैं. मैट्रिक्स तो बहुत हो गया, लेकिन मैट्रिक्स से मुझे हेल्प कैसे मिलता है इंजीनियरिंग में? मैट्रिक्स तो है ठीक है, मैट्रिक्स में ऑपरेशन कर रहे हैं इसलिए कह रहे हो मैथ वर्क, मैथ लाइब्रेरी और मैथ लैब, मैट्रिक्स लेबोरेटरी, इतना फैंसी वर्ड्स यूज कर रहे हो. बट फायदा कैसा है? फायदा कैसे है कि हमारा डेटा जो हम स्टोर करते हैं ना बहुत बड़े साइज में होता है और सबको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं मैटलैब की भाषा में. जैसे टाइम कैसे स्टोर होता है? सपोज मुझे डेटा रिकॉर्ड करना है एट टाइम इक्वल टू 0, एट टाइम इक्वल टू 0.1, 0.2, 0.3, 0.40. सो ये क्या है? वेक्टर है, टाइम वेक्टर. साथ में मेरे सेंसर का डेटा आ रहा है, इसको भी मैं क्या बोलूंगा? वेक्टर. ये भी ऐसे करके मल्टीपल वेक्टर्स आ रहे होंगे. अब ऐसे बात मेरे पास बहुत सारे डेटा स्टोर हो जाएंगे. अब मुझे टाइम का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना है. v equal to I square RT suppose I have to write, and I have data of I have data of R, I have data of T. I square RT करना है and corresponding करना है और millions of data है. So matrix operation बहुत easy हो जाएगी. In matrix operation will be very easy. So let us try making a simple graph. Start करते हैं, ग्राफ बना के देखते हैं. मुझे डेटा प्लॉट करना है, मुझे अलग अलग टाइप के ग्राफ प्लॉट करना है, मुझे अपने रिसर्च पेपर में डालना है ग्राफ्स, है ना, तो हेल्पफुल रहता है. और फिर प्रोजेक्ट्स में डालना है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ स्मॉल ग्राफ. आई विल ओपन अ स्क्रिप्ट, अ न्यू स्क्रिप्ट. ओके, आई विल गो फॉर अ न्यू स्क्रिप्ट. देखो मैं न्यू स्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा तो एक्चुअली मैंने आपको दिखाया नहीं. व्हेनेवर यू क्लिक ऑन न्यू, इट विल गिव यू एन ऑप्शन टू राइट अ स्क्रिप्ट, राइट अ फंक्शन. ओके, जैसे न्यू में क्लिक करते हैं ना तो स्क्रिप्ट आता है, फंक्शन आता है, एग्जांपल आता है, क्लास आता है, सिस्टम ऑब्जेक्ट आता है. तो अभी तो हम सब कवर करेंगे स्क्रिप्ट एंड फंक्शन. ओके, in this 4 classes we'll cover script and function. Okay, so now we are having
द मैटलैब स्क्रिप्ट खाली है। बेस्ट टू स्टार्ट विद CLC आप दे देते हो ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए कमांड विंडो की, एंड देन क्लियर ऑल। जनरली बेसिक प्रोटोकॉल स्टार्ट करने से पहले हम लिख लेते हैं ताकि कोई भी अगर डेटा हो वर्क स्पेस में खाली हो जाए। नाउ अब मैं एक डेटा डिफाइन करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है कि सपोज मुझे ना आपको डिफाइन करना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मुझे डिफाइन करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 in the distance of 1, in the gap of 1 natural numbers, then I don't have to write 1 to 10. I can write, say, I equals to 1:10 and semicolon. अब आपको पता होगा C++ में कि आपको पहले डिफाइन करना पड़ता है int I, है ना, और float I। आपको C++ पता हो, इसमें हमें डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट इट्स एन इंटीजर, सॉरी बाय डिफॉल्ट इट्स द फ्लोट वेरिएबल। बाय डिफॉल्ट 1.00000 बाय डिफॉल्ट है, आपको कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। I equal to 1 to 10 वो समझ जाएगा, I equal to 1 to 10। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। मैं अगर सेमीकोलन हटा दूं इट्स नॉट एन एरर। सेमीकोलन हटाने पे इट्स नॉट एन एरर, इट विल सिंपली डिस्प्ले द वैल्यूज इन कमांड विंडो। इसकी मैं अभी रन करके दिखाता हूं होगा क्या। मैंने रन किया और ओ सॉरी ये कह रहा है कि पहले सेव करो, तो मैं लिख लेता हूं इसका नाम टेस्ट कोड 1। इसको सेव करना पड़ेगा पहले, तो मैंने सेव कर लिया। अब मैंने इसको रन कर दिया। रन करने के बाद मैं देखता हूँ कमांड विंडो पे क्या डेटा है। तो देखो वर्क स्पेस में तो डेटा आ गया 1 to 10, कमांड विंडो खाली का खाली, कमांड विंडो में कुछ नहीं आया। वर्क स्पेस में डेटा स्टोर हो गया। अब मुझे ये भी देखना है कि अगर मैं सेमीकोलन हटा दूं तो क्या आएगा। सेमीकोलन हटाने का ये कोई एरर नहीं है, सिंटैक्टिकल एरर। इसे वार्निंग दिखाएगा, दिस विल शो अ वार्निंग, एंड if you run this without semicolon, this will print those value into the command window. Okay, let's run it faster. So now you can see it's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. It's easy. अब 100 लिखोगे ये 100 तक प्रिंट कर देगा। Now for example, if I write 1.4 to 10, अब क्या होगा? Anyone in the comments? 1.4 is to 10. 1.4:10 मैंने लिखा है, क्या होगा? कोई रिप्लाई बताओ, क्या क्या होगा? रन कमांड रन करना है किसी को तो रन कमांड उधर ही है, ऊपर के एड्रेस बार में रन आता है। तो मैंने में सौरभ कह रहे हैं कि 2 3 4 5 6 7 9 10, 1.4 1.5 to 10, 1.4 2.4। वाह, रवि रंजन ने करेक्ट आंसर दे दिया। 1.4 2.4 3.4 ऐसे होगा क्योंकि इंक्रीमेंट ऑफ 1 देता है। जब आप कुछ देते नहीं हो इंक्रीमेंट ऑफ 1 देता है। तो देखते हैं रन करके क्या आता है। मैंने किया रन, मैं गया कमांड विंडो पे और ये है 1.4 2.4 3.4 4.4। ओके, अब लेकिन मुझे तो ये नहीं चाहिए था, मुझको चाहिए था 1.4 1.5 1.6 1.7 ऐसे चाहिए था। तो मैं क्या करूं? तो हाँ, तो आप स्टेप साइज दीजिए। स्टेप साइज, हाउ टू गिव स्टेप साइज? तो स्टेप साइज देने का भी तरीका है। सो 1.4 colon 0.1 to 10, मैं थोड़ा कम दे देता हूँ because it will be huge, so 4 तक दे देते हैं। ओके, so 1.4 increment of 0.1 and after that it's reaching to 4. Okay, so if I'm not giving any incremental value, it is 1 by default, it is 1. If I give an incremental value, it will take that value. Okay, 0 point, like 1.4 से शुरू होगा, 0.1 करके बढ़ेगा, कहां तक जाएगा? 4 तक जाएगा। You can see कोलन का क्या मतलब है। मैं थोड़ा स्पेस देता हूं, आपको दिखेगा। स्पेस देना इज नॉट अ एरर इन मैटलैब। ओके, अगर आप एक्स्ट्रा स्पेसेस देते हो तो ये एरर नहीं मानी जाएगी सिंटैक्टिकली। Okay, so I equal to 1.4 colon 0.1 colon 4. Let us run this code. रन करते सेव भी हो जाता है कोड।
तो आपको दिख रहा होगा 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 और फाइनल वैल्यू है 4। ओके, क्या क्या होता अगर मैं 4.05 देता? क्या होता अगर मैं इसको 4.05 देता? क्योंकि 4.1 नेक्स्ट नंबर होगा, लेकिन 4.05 होगा तो ये नंबर तो ये नहीं पहुंचेगा, तो इसको डिडक्ट करेगा कि कंटिन्यू करेगा? अगर ये चेक करना है तो देख लेते हैं हम लोग, ताकि आपको डाउट ना रहे। तो नहीं, ये नहीं करेगा अनटिल अगर आप इसको 4.1 नहीं देंगे। तो 4.1 अगर आप देंगे तो अब ये जब आप रन करेंगे तो ये 4.1 तक जाएगा। ओके, सो लास्ट वैल्यू फाइनल होल नंबर जहां तक वो इंक्रीमेंट कर सकता है, till the time it will be able to increment, it will do, जहां तक वो इंक्रीमेंट कर सकता है वो करेगा। अच्छा, फायदा क्या है भाई? मैंने तो कर लिया इंक्रीमेंट। नहीं, हम दैट्स अ इजी वे, वी हैव अ बेनिफिट। सपोज मुझे टाइमलाइन देना है, से 0 से स्टार्ट होते हुए 0.1 के इंटरवल पे, इफ आई वांट टू प्लॉट टिल 10 sin x, यहाँ पे i है तो q इक्वल टू साइन ऑफ i। सो ये जो डेटा अगर मैं देता हूँ साइन, तो साइन में ये सबके रेडियंस में है, ठीक है, जो वैल्यूज है वो रेडियंस में है। और फिर मैं कर देता हूँ प्लॉट। तो आप कमांड्स देख सकते हो, सिंपल है, साइन फंक्शन है, प्लॉट एक कमांड है, ठीक है, प्लॉट फंक्शन एक कमांड है, इसको आप लिख सकते हो। फिलहाल के लिए आपका पहला कमांड प्लॉट, पहला कमांड आपका कमांड 1 प्लॉट, ठीक है। प्लॉट कैसे करते हैं? x वर्सेस y, x कॉमा y। सो x क्या है? i, y क्या है? q। हमने i कॉमा q कर दिया। ये दो वेरिएबल थे मेरे वर्क स्पेस में। i है 0 से 10, 0.1 के इंक्रीमेंट पे, एंड q है फंक्शन वेयर वैल्यूज। अब मुझे प्लॉट करना है x कॉमा y, तो ग्राफ में ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू प्लॉट करेगा। रिमेंबर, दोनों इक्वल साइज की मैट्रिक्स हैं, इक्वल साइज की होनी चाहिए i और q, तभी प्लॉट करेगा। अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो देखते हैं क्या आता है। ओके, इफ आई रन, देखते हैं क्या आता है। तो आप देख सकते हैं एक साइन वेरिएबल आ गया, ठीक है, साइन का कर्व आ गया। अब आप बोलेंगे मेरे को तो ठीक से वैल्यूज दिख नहीं रहा है, ये एकदम टच हो गया, थोड़ा रेंज चेंज करना है इसका। तो ग्राफ का मैं चेंज कर सकता हूँ क्या रेंज? हाँ, व्हाई नॉट, यू कैन डू दैट। हाउ विल आई डू दैट? इस प्लॉट को हम लोग क्या करेंगे, एक कमांड है, ठीक है, एक एक कमांड धीरे धीरे ऐड कर रहा हूँ ताकि आप, पहला कमांड था प्लॉट, ठीक है, आफ्टर डिक्लेरेशन पहला कमांड था प्लॉट, दूसरा है एक्सेस। बोले एक्सेस सेट करना है, बोले एक्सेस कैसे सेट करेंगे? तो पहले फंक्शन का ब्रैकेट बनाइए। ये कहता है एक्सेस एक्स मिनिमम एक्स मैक्सिमम, वाई मिनिमम वाई मैक्सिमम, ठीक है, 4 वेरिएबल लेता है स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, ध्यान से 4 वेरिएबल लेता है। एक्स मिनिमम बोला, एक्स में मिनिमम है मेरा 0, एक्स में मैक्सिमम है मेरा 10, क्योंकि यही मैंने डिजाइन किया है आई एक्स एक्सेस। वाई में मैं सेट करता हूँ -2 मिनिमम एंड +2 मैक्सिमम। अब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे दिखेगा कि मेरा ग्राफ -2 से 2 में आ गया। बोला अच्छा अच्छा, लेकिन थोड़ा देखने में, मुझे वैल्यूज देखने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कि 4 पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करना है। मैं ग्रिड बना सकता हूँ क्या? तो ऑब्वियसली आप ग्रिड भी बना सकते हो। एक और कमांड नोट कर लो, GRID, ग्रिड ऑन। ग्रिड को ऑन कर लो, ग्रिड को ऑफ करोगे ऑफ हो जाएगा, ग्रिड को ऑन करोगे ऑन हो जाएगा। तो ग्रिड ऑन, तो ग्रिड आ गई। अब आपको दिख रहा है कि अच्छा अच्छा 4 पे इसकी वैल्यू लगभग कुछ है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा 4 पे क्या है? तो टूल्स दिए हुए कुछ, यहाँ पे आपके कुछ टूल्स दिए हुए ऊपर। तो यहाँ पे एक वैल्यू वाला टूल है, डेटा कर्सर है। डेटा कर्सर से आप जाके ग्राफ में कहीं पे भी क्लिक करेंगे आपको डेटा वैल्यू देगा वो। तो दिखा रहा है 4 पे है -7.568। ओके, साइन का वैल्यू है ये। तो बोला अच्छा ठीक है, लेकिन ये ग्राफ से तो मैं इसको तो मैं प्रोजेक्ट में नहीं डाल सकता, इसमें तो लेजेंड वेजेंड नहीं है। कहा लेजेंड भी डाल दीजिए, लेजेंड किस डालेंगे? लेजेंड डालने का बहुत अच्छा तरीका है, LEGEND, डायरेक्ट कमांड है लेजेंड। लेजेंड और कितने वेरिएबल आ सकते हैं? जितने प्लॉट्स हैं। अभी तो मैंने सिंगल प्लॉट दिखाया है, बाद में बताऊंगा मल्टीपल ग्राफ्स, मल्टीपल इक्वेशंस,
प्लॉट कैसे करेंगे आज देख लीजिए कमांड्स थोड़े। प्लॉट, एक्सिस, ग्रिड, लेजेंड। ओके, लेजेंड में सिंगल कोट के अंदर आप अगर लिखेंगे साइन कर्व, जो भी सिंगल कोटेशन के अंदर लिखेंगे वो आएगा सिंगल कोट। ध्यान रखिए डबल कोट नहीं, सिंगल कोट। लेजेंड के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट। ठीक है, चौथा कमांड आपका लेजेंड। लेजेंड के अंदर साइन कर्व आपने लिख दिया। सो अब देखते हैं ये ग्राफ महाशय क्या बोलते हैं। लेट अस सी। तो ग्राफ महाशय बोल रहे हैं साइन कर्व, तो पुनः आप थोड़ा प्रेजेंटेबल लगा। तो लेकिन अब मेरे को पता नहीं एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, ये कैसे डालूं। तो हाँ, अरे अरे ये भी तो बात है, एक्स एक्सिस पता होना चाहिए, वाई एक्सिस पता होना चाहिए। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे पता करेंगे, तो कमांड लिखते हैं इसके लिए भी। तो एक्स एक्सिस है तो लिखेंगे एक्स लेबल, एक्स को लेबल करना है मुझे, एक्स को लेबल करूंगा, एक्स को लेबल करूंगा सिंगल कोड के अंदर। ओके, एक्स लेबल फंक्शन सिंगल कोड। मैं बोलूंगा ये मेरा टाइम कर्व है, टाइम कर्व। ओके, टाइम है मेरा किसमें, सेकंड्स में मान रहा हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, टाइम इन सेकंड्स। फिर मैं बोलता हूँ वाई को भी लेबल कर दो, वाई लेबल। वाई लेबल में मैं कुछ डाल देता हूँ सिंगल कोड के अंदर, जो लिखूंगा वो आ जाएगा। फंक्शन वैल्यू लिख देता हूँ, फंक्शन वैल्यू, ओ सॉरी फंक्शन वैल्यू। तो फंक्शन वैल्यू आ गया। इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। तो सॉरी स्टॉप शेयरिंग हो गया, फिर से शेयर कर देते हैं। तो रन करके देखते हैं इसको। स्टॉप शेयरिंग के बहुत पास है एक्चुअली वो रन, तो आपको इजी रहेगा। रन कहाँ है, स्टॉप शेयरिंग के पास, जहाँ पे स्टॉप शेयरिंग आता है अपर पैनल में, वहीं पे पास में है रन। तो स्टॉप शेयरिंग के बहुत पास में है। तो देखिए अब आ चुका है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में लेबल, लेबलिंग आ चुकी है। बोले अरे हेडिंग भी चाहिए थी मेरे को, हेडिंग भी तो लिखना है। अच्छा अच्छा हेडिंग भी लिखना है, ठीक है हेडिंग भी दे देते हैं इसको। हेडिंग कैसे देंगे, एक और कमांड नोट कीजिए। तो हमने ध्यान दिया प्लॉट, एक्सेस, ग्रिड, लेजेंड, एक्स लेबल, वाई लेबल। अभी एक और कमांड है टाइटल। ठीक है, टाइटल कमांड अगर आप देखें तो टाइटल कमांड में सीधे लिख दोगे फंक्शन ग्राफ, कुछ मैंने लिख दिया ऐसे, जो भी आप लिखोगे वो वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा, फंक्शन ग्राफ। ठीक है, तो हम इसको करते हैं रन। इसको मैं रन करता हूँ तो हेडिंग भी आ गई, हेडिंग आ गया, लेजेंड आ गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गया, ग्रिड आ गई, फंक्शन आ गया। तो बोला अरे ये तो बढ़िया हो गया। इसको मैं इसको एक्चुअली आप क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट करने से 300 dpi यानी हाई क्वालिटी इमेज में एक्सपोर्ट हो जाएगा, ये तो अच्छा दिखता है। अभी जैसा दिख रहा है इससे अच्छा दिखता है। अगर आप इसको एक्सपोर्ट करोगे थोड़ा 150 dpi में होता है, लेकिन बढ़ा दो सकते हो 300 dpi 600 dpi में। अभी बाद में बताऊंगा आपको एक्सपोर्ट करके इसको। फिर देखिए लोग जैसे यहाँ पे अगर आप करोगे तो एक्सपोर्ट सेटअप आता है। ठीक है, एक्सपोर्ट सेटअप आता है, पता नहीं आप लोग याद रख पाओगे नहीं रख पाओगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा, लेकिन ठीक है। एक्सपोर्ट सेटअप में आएगा रेंडरिंग। रेंडरिंग में एक तो होता है रेजोल्यूशन ऑटो डीपीआई, इसको बढ़ा के आप 300 कर दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक्सपोर्ट कर दोगे तो ये इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, एग्जाम्पल इमेज, एग्जाम्पल इमेज इफेक्ट। अब इफेक्ट की जगह जेपीजी कर दूंगा, एज जेपीजी में सेव कर दूंगा। ओके, तो एक्सपोर्ट हो चुका है, देख लेते हैं कैसा इमेज बना है टाइटल वाइटल के साथ। इसने सेव कर दिया कि इसको देखो आप ये कैसा दिख रहा है, और जो हमारा फाइनल आउटपुट इमेज आया ना वो थोड़ा अलग दिखेगा इससे। एग्जाम्पल ये रहा एग्जाम्पल इमेज। अगर हम एग्जाम्पल इमेज देखेंगे, एग्जाम्पल इमेज खुलने में टाइम ले रहा है। एग्जाम्पल इमेज कुछ ऐसा दिखेगा ना, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। अगर आप इसको किसी वर्ड फाइल में कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको और अच्छा दिखेगा। अभी मेरा कोई वर्ड फाइल, कुछ तो वर्ड फाइल खुला हुआ है मेरा, इसमें आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ। इसको मैंने अगर कॉपी कर लिया,
सपोज मैं कोई रिपोर्ट बना रहा हूँ, तो उस रिपोर्ट में मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। इस ग्राफ को मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ओके, तो आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट वगैरह में इसको यूज करके ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हो अगर आपके पास डेटा है तो, या फिर फंक्शंस है, मैथमेटिक्स है, आप उसको प्लॉट करने में यूज कर सकते हो। किसी का कोई प्रश्न, क्वेश्चन, anybody want to ask any question, any doubt, now you can ask and I will give you an assignment. I will share it to the coordinators and they will be sharing it to you. It will be on mathematics. It will be on mathematics जो मैंने बहुत कम डिस्कस किया, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये उस पे होगा, तो ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें। कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट टाइम पूछिएगा। If you have any doubt, you can please ask me in the next session. Okay? Please, any questions? If anyone have any questions, they can ask from sir. तो एडिटर का और कमांड विंडो का सॉफ्टवेयर अलग अलग डाउनलोड करना पड़ेगा? अगर आप ऑनलाइन मैटलैब यूज कर रहे हैं या ये यूज कर रहे हैं? सर ऑक्टेव डाउनलोड किया है अभी। ऑक्टेव, करेक्ट, उसमें रहेगा स्क्रिप्ट या एडिटर, ऐसे कुछ दिखाएगा वो। मेरे पास ऑक्टेव भी है, मैं ऑक्टेव में चला के दिखा सकता था, अभी तो ऑन नहीं किया मैंने, बट उसमें भी इक्विवेलेंट कमांड्स है। अगर आप न्यू पे जाएंगे ना, न्यू पे दिखाएगा वो। यस सर। 3D ग्राफ्स, हाँ, आयुष ने पूछा है कि 3D ग्राफ्स बना सकते हैं क्या? यस, हम 3D ग्राफ बना सकते हैं, वो भी इन सेशंस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा 3D ग्राफ कैसे बनाना है। आपको आपका आया न्यू स्क्रिप्ट आया आपके में? यस सर, आ गया, न्यू स्क्रिप्ट तो आ गया। श्योर। तो 2D ग्राफ, 3D ग्राफ ऑक्टेव में भी बन जाते हैं, मैटलैब में बन जाते हैं, 3D ग्राफ्स दोनों में बन जाते हैं। कुछ अगर ना बने तो मुझे बताइएगा। ओके, अगर आप ऑक्टेव में अगर ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज ऑफलाइन फ्री अवेलेबल है, अगर आप ऑक्टेव में कुछ ट्राई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं कई बार मैटलैब ऑनलाइन क्लासेस के लिए इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि ये तुरंत रन कर देता है। ऑक्टेव कई बार थोड़ा टाइम लेता है, अगर जैसे कोड बड़ा होता जाता है ना, वो रन होने में टाइम लेता है। मैटलैब इमीडिएटली रन कर देता है उसको, इसलिए मैं ऑक्टेव में जनरली ऑनलाइन सेशंस में मैं मैटलैब यूज करता हूँ। So we can make 3D diagrams also. Yes. Can we make 3D diagrams as well? You just Can you said type? that आपका वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा। I asked if we can make 3D diagrams as well. You want to make which diagram? She is 3D. asking, can we make 3D diagrams? Yes, you can make 3D plots, you can make 3D diagram, you can make like our corona curve, you know, it goes and comes down. In the same way, you can make a 3D plot also, umbrella kind of thing. Meshes you can make. You can make contour plots, contours, you know, different. One of my friend recently at IIT Kanpur made a simulation with me in which he has to make EDM जो होता है ना, electro discharge machining. जब आता है इलेक्ट्रॉन स्पार्क जनरेट करता है तो होल क्रिएट करता है। So that 3D surface we have made in using simulation. We have made 3D surface of impingement. So spark by spark कैसे वो कितना surface roughness होगा we calculate. So yes, we can do a lot of things. आज तो फर्स्ट क्लास था तो आपको बस इंट्रोड्यूस करा रहे हैं few commands. MATLAB is very powerful tool. बहुत heavy calculation कर सकता है, एनिमेशंस भी कर सकता है, मूविंग ग्राफ्स बना सकते हो आप, मोशन ग्राफ्स। 3D में मोशन ग्राफ्स मतलब ग्राफ टाइम के साथ चेंज होगा, सो ऐसे ग्राफ्स भी बना सकते हो आप। वीडियो मतलब ग्राफ का वीडियो, दैट इज आल्सो पॉसिबल। Can we change the color of the graph? Sorry?
Okay, so we can make 3D graphs, we can make 3D moving graphs, we can make 2D graphs, 2D moving graphs. We can simulate some animations also, not cartoon animations, but you can say physics animations. We can perform like spring mass damper systems. We can simulate how it will move, how the vibrations would be. So those things we can also simulate. You can see the response. I will show you a very simple example in maybe in next classes. Can we change color according to what you want? Yes, you can change color. आज मैंने लिया नहीं session में, but we can change color. And I will say how we have limited colors. We don't have unlimited colors. And how to use that also I will tell you. Okay, so any other question? If anyone have any question, they can ask in feedback form. Now I would like to thank you, sir, for giving such a wonderful explanation and for your humble gesture. Like, sir has helped us a lot since 2014 in arranging this Techsphurti session. So thank you for this. So thank you for the previous sessions. We would always like Thanks. to hear from you. Thank you, sir. Thanks. Now it's the time for the spiritual session by Dr. Ravi Prakash. Let me introduce him. He is a BTech from NIT Silchar with gold medal 9.6 CGPA. He is a PhD from IIT Kanpur with 10th CGPA. He is the winner of Amazon Robotics Challenge in Germany 2016 and Japan 2017. He finished PhD, his postdoctorate at TU Delhi, Netherlands in robotics and machine learning. We welcome you, sir, Dr. Ravi Prakash. Over to you, sir. I think there is some internet problem. He'll join soon. Please wait for a second. I think Ravi Prakash sir is here. We would like to welcome sir. Please write Hare Krishna in the chat box. All of you, please. No, Please welcome sir by writing Hare Krishna in chat box. thank you very much, Max. So actually, my internet is a little bit problematic in PC. So I have just logged into another one. Okay. So Yes, sir. I have shared my presentation with. If you can just see my presentation. Let me. Yes, sir, just a second. I have shared. Can you just project it? Yeah. I don't know. There was some issue today, but that's why I sent you.
Yes, sir, your presentation is with me. I'm just sharing it. Yeah, just share it. For the bandwidth, I may like to switch off my video. Otherwise, I think it may also stop. Okay, so till the presentation is going on, I will switch on off. After the presentation, I will switch on to take some questions. Okay, fine. So let's. I will just discuss a very interesting topic, right? Which is regarding a very common and widely known thing which we have learned from our school days, or we come across very often, which is about this Big Bang theory. Basically, whenever somebody starts meditating on nature of the existence, or how we have come into this world, and automatically any intelligent person will start contemplating what happened initially, how did this start. So what happened, many scientists have proposed this Big Bang theory, or some modified version of it, to explain how this universe has originated. And so we will see today in this brief. Just I want to share what we have read, what I would like you to contemplate also. So go to the next first slide. Okay, so you can see here what is Big Bang theory. So what happens according to this Big Bang theory? In the beginning, there is a matter which is concentrated into a single point. That is basically the definition. I'm just reading out for you. There is a single point which is at extremely high temperature, and then it explodes with tremendous force. So from an expanding superheated cloud of subatomic particles, there are gradual formation of atoms, then stars, then galaxies, planets, and finally life. So although this theory, you can see in the left hand side, is just a portrait of this Big Bang theory. Although it's very mind grabbing and very widely publicized, and so but it literally collapses when confronted with a question. What is the question? Where did the singularity come from? So when sometimes there is a question asked from somebody, let's say a religionist, who believes that everything has come from God. So normally this reductionist so-called scientist or atheist, they just ask, where did your God come from? So just as the religionist answers that God is the all cause of all causes, this process of Big Bang also need to have a faith in their own God. What is that God? In their terminology, God is a mathematically indescribable, physical, unrealizable point of infinite density and temperature, which is the cause of all causes. So basically, it's like they also stand exposed for committing the same intellectual crime that they charge on the religionists with. What is the charge? Where does your God come from? And so if you just try to accept this Big Bang theory, then you will have to accept that there is a single point from which everything expands. So now, uh, well, practical our experience, we have seen that to create any intelligent thing, we need a designer or a living person. For example, a carpenter gives shape to a lot of designs. A civil engineer gives shape to skyscrapers. Automobile gives the engineer gives shapes to automobile industry. It's a Mercedes Benz. So this is very common sense.
And so there is choice here between rational science. So the choice is not between rational science and blind faith, but between blind faith garbing itself as a science on the one side and common sense represented by blind faith on the other side. So normally, if you see both this concept, Big Bang theory and this acceptance of an intelligent creator, is a phenomenon which is out of space and time, basically out of current dominion of science, where we can test our science knowledge, because this contains information which is beyond the domain of the current science. Like if you have a function which with a defined domain and range, and you use values beyond that domain, then the function will not give you correct values. So similarly, there is a domain of the science, and when it's applied uh, mm, to theories of origin, and this is all, both of them have come under the scanner of the same problem, how everything started at the first. So we will see some of the examples. Uh, Actually, there is a book. Go to the next slide. There is a professor, Dr. Hug Ross. So he is an astrophysicist. He is actually from University of Toronto, and he has written a very elaborate topics on why the universe is the way it is. It also deals with creation. It deals with very very detailed. Uh, so even if, let's say, for the argument's sake, we accept the Big Bang cosmology to be true, then there are a lot of interactions which happens between this matter and energy, and the values of those, some constants and natural forces need to be very very precise to so that the universe exists. So now the question is, who is the designer, or who fine tunes those values? Is it very automatically? It's very very random chance, just by a very mere empirical common logic. So this professor Hagros also explains this in this book. Go to the next slide. So in the next slide, we'll see. Yeah, so this is microscopic fine tuning. So the first part is like how we observe electromagnetic forces in our nature. Like for example, if the force of electromagnetism is weaker than what it exists now, there won't be sufficient electromagnetic pull to keep the electrons orbiting the nucleus. And if the electron cannot orbit nucleus, then the electrons cannot be shared so that the nuclei can come together to form molecules. So without those molecules, we will have no life. So this is, if the electromagnetism is weaker, this will happen. They will not form molecules. If the force is stronger, then what will happen? The nuclei will hang on to the electrons, and with such strength that the electrons will not be shared and molecules will not form. So in both the, if the value of that electromagnetic force is a little bit here and there, then the universe will have no molecules and therefore no life. Go to the next slide. So there are also, second one, we will see this nuclear force. Nuclear force. What is the nuclear force? It's the force that holds protons and neutrons together in a nucleus, and these are very very strong force. This is one of the basic four forces in physics. So if this nuclear force is very strong, too strong, then the proton and neutron in the universe will find themselves stuck to other proton and neutrons, which means we have a universe which doesn't have hydrogen, because hydrogen is composed of a bachelor proton, and it will be inconceivable to imagine a life without hydrogen. On the other hand, if the nuclear force is slightly weaker, then none of the protons and neutrons will stick together. Okay, and all of the protons and neutrons will be bachelors, in which case the only element that would exist in the universe is hydrogen.
And again, if you don't have hydrogen, then it's a problem. If you have only hydrogen, that's a problem. So the value of this nuclear force has to be so sensitively adjusted that if 3 by 10th percentage stronger or 2% weaker, life would be impossible at any time in the universe. So this is the fine tuning we are discussing based upon the findings, scientific findings, and just to emphasize that how much intelligent creation is needed. Like for example, like I am working in robotics, and to for an outsider who visits our lab, the robot moves its hand, it does nice cool stuff, so people feel very nice, very happy. Oh wow, robot is doing this. But behind that working of the robot, we have to write thousands of lines of code, and if even one statement has an error or the bug, the robot doesn't move. So that much precise even this universe has to be, otherwise it will not exist. Go to the next slide. This is all in the microscopic level we are talking about. Another, consider this mass of proton and neutron. What happens? The neutron is 0.138% more massive than the proton. Okay, relative mass is 1 here, but it's like very slightly, and because of this, it takes a little more energy for the universe to make neutrons as compared to protons. That is why in this universe we have 7 times as many protons as neutrons. Okay, protons are 7 times more. If the neutron were 1/10 of the 1/10 percentage less massive than what we observe today, then so many neutrons, the universe would make so many neutrons that all of the matter in the universe would very quickly collapse into a neutron star and black hole, and life will be impossible. And if the neutron were a little bit massive, then the universe could make very few protons, very few neutrons basically, and there will be not enough neutrons to make carbon, oxygen, nitrogen, phosphorus, and this stuff. So there will be again no life. So see the fine tuning, the accuracy of this fine tuning which exists in our universe, that it will propel you to think that, oh, it's not this is very very intelligently designed. Go to the next slide. We'll also see some examples in the macroscopic level. We saw in the microscopic level, and we'll see some example on the macroscopic level. So what happens in the macroscopic level? See the speed of Earth rotation. Like it has been seen, if the Earth rotates too quickly, we'll have too many storms like tornadoes and hurricanes. And if it rotates too slowly, it will be too cold at night and too hot during the day. So such is the speed of rotation maintained for very nice balanced life on Earth. Go to the next slide. Another one is design the right size of the moon. The Earth's moon's system is that of a small planet being orbited by a huge single moon. Okay, and that huge single moon has effect of stabilizing the rotation axis of the planet Earth at 23.5 degrees. That's the ideal tilt for life on planet Earth. The axis on the planet Mars moves through a tilt from 0 to 60 degrees and flicks back and forth. If that were to happen on Earth, life would be impossible. Thanks to Moon, it's held stable at 23.5 degrees. So see the design of Moon again. It's natural. Uh, this the planet which helps stabilize Earth. This design exists naturally, and that has been done very intelligently. Go to the next slide. This is another one is the position of Jupiter. You see Jupiter there. So it takes a supermassive planet like Jupiter. It acts like a shield guarding the Earth from cosmic collisions. We don't want a comet colliding with Earth every week, right? So like that's why these are like very very hundreds and more than 100 example from such fine tuning. Okay, both in micro. I just saw and compiled some of those examples.
Go to the next slide. So the question is, what we started, how did this fine tuning come? Basically, we came to this problem because the Big Bang theory, that everything was so nicely designed. Even if we accept, okay, so nicely designed, then where did this come from? So normally what happens, there is also explanations that there are multiple universe theory, and we just happen to be in a universe where everything is suitable for our existence. And but many of the very senior scientists like Sir Martin Rees, he's an astronomer of Great Britain. He writes in his books that these are all numbers and speculations. And there is another very strong laureate, Nobel laureate. Go to the next slide. He is a physicist. His name is Arthur Compton. And what he has to say, let us hear. He says that for me, how it began, everything began. For me, faith begins with the realization that a supreme intelligence brought the universe into being and created man. It is not difficult for me to have this faith, for an orderly, intelligent universe testifies to the greatest statement ever uttered: in the beginning, God. So this topic is not very easy, but according to what I have experienced, what I have heard from very great personalities, I'm just sharing some of the uh, fables, maybe from the big understanding of this universe and truth, that there is a very intelligent creator which controls and runs this whole universe. Or even if you accept this Big Bang theory, because this is a phenomena somebody has observed using decades of observations at how the universe evolved, but that is just a phenomenon of which happens, and behind that is a very intelligent personality who designs and puts all the value, all the fine tuning at both micro and macro level. So I would like all of you to just ponder over this, and it's better to accept something which is makes sense, because anyway both of them are beyond space and time, and something which is really as a science, we should not accept science as a black model. Oh, everything even in science there are a lot of uh, logic involved. Like for example, if you cannot accept anything blindly, you cannot reject also blindly. You need to first experience, test it. So the spiritual science is actually the test bed is a little different. The test bed is spirit himself. So all the spirit science, if you want to realize your existence, whether you are made of matter or antimatter or spirit, we need to do experiment on that level. For example, for matter, there are experiments on the matter level. For a spirit, there are experiments on the spirit level. So this God, the existence of universe, the soul, these are all very intricate and important topics in our life. And you're fortunate that you have met some of your seniors who can answer you these questions. And also, I would like to thank you to give a hearing this, and hope that you will try to simulate whatever we have covered. And I will just take some quick questions if anybody of you want to ask. Hare Krishna. Thank you very much. Hello, Mahek. Yes, sir. If anyone have questions, they can write in the chat box or they can unmute themselves and ask. You can write in chat box. You can read if they are writing anything. Questions, okay? Sir, if possible, we can chant for 1, 2, or 3 minutes. Okay.
So it's very nice that so many people are attending these sessions, and you should always be grateful because not everybody gets this chance to ask these very serious questions in our life, which has very profound meaning and relevance in our life. Okay, Mehak. So thank you for giving me opportunity to speak. I wish Uh, all we the have best. taken we have taken so much time from your busy schedule. So we'd like to take 1 more minute to thank you. In very short time, sir has given us very good information, and we thank you, sir, with our gratitude and from bottom of our heart. And we always like to hear from you again. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, everyone, for joining this session. You will get the quiz and the assignment. You can complete it and fill the feedback form. Thank you.